अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये है इंट्रोडक्शन वीडियो इस प्लेलिस्ट के लिए जिसके अंदर हम सीखेंगे फिग्मा को बेसिक लेवल पे और रीजनिंग के साथ कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आई एम किरण and I have been working as a product designer from about 5 years by the time I'm recording this video. So yeah, actually I started recording these videos क्योंकि मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रही थी एंड इट गॉट रियली बोर्ड doing it all alone, so I started recording these videos and फिर मैं आई हैड अ चांस कि मैं कुछ लोगों से डिस्कस करूं कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड I got to know कि the beginners हैं they struggle with the reasoning on why something needs to be done um, in a certain way. और जब वो कोई सॉफ्टवेयर को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, they are like with the current trend they only find short tutorials 1 minute or 5 minute 5 second or even up to uh, you know 2-2.5 मिनट के ट्यूटोरियल्स के अंदर दे आर लुकिंग कि पूरा पूरा लर्निंग पेज बन रहा है एंड एवरीवन इज नाउ फोकस्ड ऑन एआई. सो इफ दे डोंट नो द बेसिक्स तो जहाँ पर वो स्टक हो जाते हैं दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. And specifically the audience I am targeting with this playlist is जो कि जिसको बिल्कुल भी idea नहीं है but why they are here and they are like okay UX design सीखना है, product design सीखना है, Figma सीखना है, Figma क्योंकि it's less costly इसके अंदर design सीखना है and they have no idea what to do and what not to do by using these elements से कुछ software की restrictions हैं and कुछ भी. So they want to talk and listen in detail. So I started recording myself, revising all those concepts in a way. Um, okay, I'm telling someone, I am teaching someone. It got less boring, and I hope this helps someone. So just one thing, why I'm calling this boring is because it's not your typical traditional or trending, I'll say, short tutorial type of course. It's more focused on uh, कौन सी चीजें आपने अवॉइड करनी है और देन with each element actually, like when I'm talking about frames I'm telling what mistakes not to do when you are using frames and how should you select the frames and what should you do and what should you never do और कब कौन सी चीजें ऑप्शनल हैं and what are the side effects of you know do something जो don'ts की लिस्ट में है. So, yep, it is going to be a long and descriptive playlist. I am expecting it to go up to 12 to 14 hours. And it will only cover the basics and गोल ये होना चाहिए जो भी इसको देख के यूज कर रहा है प्लेलिस्ट को 1 महीने को के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें सारे कंटेंट को एंड यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ फिग्मा इन 1 मंथ. इसका मतलब है कि यू ओनली नीड टू वॉच 2 to 2.5 hours पर वीक और उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस एंड देन यू विल बी मास्टर एट द बेसिक लेवल फिग्मा स्किल्स ना. तो या उसके अलावा मेरी टिप यही है कि इफ यू गेट बोर्ड यू नीड टू you should make the video speed 1.5 or even 1.75 and even 2 भी कर लो. Honestly, I have tested and sometimes it works fine. So watch a video, take notes, then uski practice करें and then go back and see if something it was a little complex. तो उसको दोबारा से practice करो या दोबारा से देख लो. I'm trying to introduce some activities. कुछ कुछ बीच में डाल भी दी हैं. So you guys have something to add to your dribble when you start or even LinkedIn if you are looking for jobs. I'm still working on the activities part though ताकि और भी डाल सकूं but still yep it's a work in progress at the point जब मैं record कर रही हूँ. So see you guys in a lot of videos now.